Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed about the shortest distance between two skew lines. The concept of skew lines क्या होती हैं और इनके बीच में जो shortest distance होती है उसका हमने deduce किया था, calculate किया था previous class में. Means if you have two skew lines, line first like this and line second like this, then there exists a unique line segment which is perpendicular to both L1 and L2. Suppose this is your line first and this is your line second. Line first has the equation R vector is equal to A1 vector plus T times V1 vector, and line second has the equation R vector is equal to A2 vector plus S times V2 vector. If they are two skew lines, then the shortest distance between them is given by the expression that we have deduced in the previous class, and that expression is actually magnitude of V1 cross V2 dot A2 minus A1 divided by magnitude of V1 cross V2. This is actually the expression for calculating the shortest distance between two skew lines. So where in this expression V1 is a vector which is parallel to line first, V2 is a vector which is parallel to line second, A2 is the position vector of point through which line second passes, and A1 is the position vector of that point through which line first passes, and again V1 and V2 are two vectors which are parallel to the lines first and second respectively. So that was the article actually that we have deduced in the previous class. Now here we are going to discuss two important concepts regarding these lines, and they are, if two lines are perpendicular, suppose this is our line first and this line first is represented by the equation, suppose again R vector is equal to A1 vector plus T times V1 vector, and you have another line which is just perpendicular to line first, and suppose that line has its equation as R vector is equal to A2 vector plus this S times V2 vector, right? अगर इस V1 वेक्टर को देखेंगे तो V1 वेक्टर इज दैट सॉर्ट ऑफ वेक्टर विच इज पैरेलल टू लाइन फर्स्ट, तो ये जो वेक्टर होगा that must be V1 vector because V1 vector is that sort of vector which is parallel to the line first, and similarly V2 vector एक ऐसा वेक्टर होगा which is parallel to the line second. So ये होगा हमारा V2 vector. Now when two lines are perpendicular, obviously their parallel vectors are again perpendicular, क्योंकि दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो दो लाइन्स के अपने अपने पैरेलल वेक्टर्स होंगे V1 और V2 वो भी आपस में दिस परपेंडिकुलर होते हैं. तो V1 एक नॉन जीरो वेक्टर होगा, V2 एक नॉन जीरो वेक्टर होगा, और दो नॉन जीरो वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होते हैं? If their dot product is equal to 0 पढ़ा है हमने in case of dot product of vectors. So two vectors are perpendicular if their dot product is equal to 0. Means यहाँ पे V1 dot V2 फिर आएगा 0 के बराबर. अब अगर V1 आपके पास वेक्टर है that has been expressed as A1i plus A2j plus A3k, और V2 आपके पास वेक्टर है that has been expressed as suppose B1i plus B2j plus B3k. तो फिर आपको V1 dot V2 करना है. V1 is a vector expressed in terms of components. V2 is again a vector expressed in terms of components. When two vectors are expressed in terms of their components and you need to find their dot product, then their dot product is directly equal to the sum of products of their corresponding rectangular components. Means A1 into B1. तो डॉट प्रोडक्ट फिर आएगा A1 इंटू B1 प्लस A2 इंटू B2 प्लस A3 इंटू B3. But what about this A1, A2, A3 and what about B1, B2, B3? A1, A2, A3 ordered three tuple of A1, A2, A3. They are the direction ratios of vector V1, and similarly ordered three tuple of B1, B2, B3. They are the this direction ratios of vector V2. So sum of products of direction ratios is equal to 0. Means when two lines are parallel, then the sum of products of direction ratios of their parallel vectors is when two lines are perpendicular, then the sum of products of the
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ देयर पैरेलल वेक्टर्स मस्ट बी 0, राइट। अब v1 जो है वो लाइन फर्स्ट और v1 वेक्टर आपस में पैरेलल है। पैरेलल वेक्टर्स के जो या पैरेलल लाइंस के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं या सेम होते हैं। सो सिंस पैरेलल लाइंस हैव आइदर सेम और प्रोपोर्शनल डायरेक्शन रेशियोज, तो v1 के डायरेक्शन रेशियो a1 a2 a3 है, इसलिए लाइन फर्स्ट के भी डायरेक्शन रेशियो होंगे a1 a2 a3। सिमिलरली line second is parallel to vector v2, v2 has its direction ratios as b1 b2 b3, तो line second के भी direction ratio बनेंगे b1 b2 b3। अब अगर ये लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 0 के बराबर है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर डायरेक्शन रेशियोज इज 0। So if two lines are perpendicular, then the sum of products of their direction ratios is 0, and same is true for the direction cosines. Means if two lines are perpendicular, then the sum of products of their direction cosines is again 0, right? तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, नोट में हम ये चीज यहाँ पे मेंशन कर देंगे क्योंकि ये हमें आगे काम आएगा एक्सरसाइजेज में। If two lines are perpendicular, if two lines are perpendicular, then the sum of products of their direction ratios, as well as direction cosines, डायरेक्शन रेशियो ले लो या डायरेक्शन कोसाइन ले लो, फिर उनका सम ऑफ प्रोडक्ट कर दो इज 0, वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। सो जिगरा अगर दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है, फिर इनके डायरेक्शन रेशियोज, कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का सम ऑफ प्रोडक्ट कर दो या डायरेक्शन कोसाइनस का सम ऑफ प्रोडक्ट कर दो, तो वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। और अगर दो लाइन्स आपस में पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन्स वुड बी आइदर सेम or proportional. So parallel lines have either same or proportional direction ratios and same direction cosines, while as perpendicular lines में ऐसा possible नहीं है। perpendicular lines में क्या होता है कि the sum of products of their direction ratios is 0 as well as the sum of products of their direction cosines is 0। तो ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें आगे एक्सरसाइज में काम आएगा कि if two lines are perpendicular, if two lines are parallel, then they have either same or proportional direction ratios but same direction cosines, and if two lines are perpendicular, then the sum of products of their direction ratios is 0 as well as the sum of products of their direction cosines is 0। तो ये था एक फैक्ट जो हमें आगे एक्सरसाइज में काम आएगा। So far we have actually concluded the building material needed for this exercise second of three-dimensional geometry. So here lies exercise 11.2 of this three-dimensional geometry, and in the very first question of this exercise we have been asked that we have three given lines with their given direction cosines. Line first has the direction cosines 12 by 13 minus 3 by 13 minus 4 by 13. Line second has the direction cosines 4 by 13 12 by 13 3 by 13. Line third has the direction cosine is 3 by 13 minus 4 by 13 and 12 by 13, and we need to prove that all the three lines are mutually perpendicular. Line first is perpendicular to line second is perpendicular to line third is perpendicular to line first। तो कैसे करेंगे जिगरा? बाय द प्रीवियस टॉपिक जो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि दो लाइन्स पैरेलल होती हैं या दो लाइन्स परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज हैं तो डायरेक्शन रेशियो से बता सकते हो कि कब होती है परपेंडिकुलर, अगर सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज 0 के बराबर है। लेकिन इस समय हमारे पास अवेलेबल है डायरेक्शन कोसाइन्स, तो यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ टू लाइन्स इज 0, देन ऑब्वियसली लाइन्स मस्ट बी परपेंडिकुलर। तो सपोज इन तीन लाइन्स जिनके गिवन डायरेक्शन कोसाइन्स दे रखे हैं, सपोज इन तीन लाइन्स को हम डिनोट करेंगे L1, L2 एंड L3 से। Let the given lines be
let the given lines be, yes, L1, L2 and L3. सपोज ये जो गिवन लाइन्स हैं, ये है लाइन फर्स्ट, लाइन सेकंड एंड लाइन थर्ड. देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ L1 they are given. Therefore direction cosines of L1 are, yes, what are they? Ordered 3 tuple of 12 by 13 minus 3 by 13 minus 4 by 13. Similarly, direction cosines of line second are, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन सेकंड आर, तो लाइन सेकंड के डायरेक्शन कोसाइन क्या आ रहे हैं? यस, दे आर गिवन. सो दैट्स अगेन ऑर्डर्ड 3 tuple of 4 by 13, 12 by 13, 3 by 13. Clear? And in the similar fashion, the direction ratios of line third would be, direction cosines of line third are, yes, ordered 3 tuple of 3 by 13, minus 4 by 13, 12 by 13. They are the given direction cosines of 3 lines. And we have to prove that all the 3 lines are mutually perpendicular. So first we will try to show L1 is perpendicular to L2. तो कैसे show करेंगे, कैसे prove करेंगे कि L1 is perpendicular to L2? हम करेंगे sum of products of direction cosines. अगर sum of products of direction cosines of L2 and L1 and L2 0 के बराबर आ रहा है, तो obviously they must be perpendicular to each other. तो यहां पे देख लेंगे, therefore 12 divided by 13 को 4 by 13 से मल्टीपल करेंगे. सो 12 divided by 13 into 4 divided by 13 plus, yes, minus 3 divided by 13, सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन को सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन के साथ, into 12 divided by 13 plus minus 4 divided by 13 into 3 divided by 13. That is sum of products of direction cosines of line first and line second. देख लेते हैं किसके बराबर आ रहा है. That's equal 4 12s are 48 divided by 13 into 13, that's 169, right? Plus into minus is minus. 3 12s are 36, plus into minus is minus. 3 12s are 36 divided by 13 into 13 is again 169. Clear? Plus into minus is again minus. 4 into 3, that's 12 divided by 13 into 13 is again 169. 169 169 169 कॉमन डिनोमिनेटर है तो कॉमन रख लेते हैं. सो 169 आ रहा है कॉमन डिनोमिनेटर. तो ऊपर देख लो जीरा क्या होगा, 48 माइनस 36 और माइनस 12 कितने हो गए, माइनस 48. सो 48 माइनस 48 दैट इज जीरो बाय एनीथिंग विच इज जीरो. मीन्स हमने किया था सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन फर्स्ट एंड लाइन सेकंड. वो किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है 0 के बराबर. तो इसका मतलब ये लाइन फर्स्ट और लाइन सेकंड आपस में परपेंडिकुलर होंगी. दैट इज, इसका क्या मतलब, द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स, the sum of products of direction cosines of L1 and L2 is 0. तो जिगरा इसका क्या मतलब, therefore L1 is perpendicular to L2. इसलिए L1 और L2 आपस में perpendicular होगी. In the similar fashion you can prove that L2 is perpendicular to L3. अब L2 के डायरेक्शन कोसाइनस को L3 के डायरेक्शन कोसाइनस के साथ सम ऑफ प्रोडक्ट कर दो, 0 के बराबर आएगा. फिर L3 को L1 के डायरेक्शन कोसाइनस के साथ सम ऑफ प्रोडक्ट कर दो तो वो भी 0 के बराबर आएगा. तो यहां से आपको क्या मिलेगा, L2 is perpendicular to L3 and L3 is perpendicular to L1. So means when L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3, L3 is perpendicular to L1, means all the three lines L1 and L2, L1, L2 and L3 are mutually perpendicular, right? In this way you can go through this result. L2 is perpendicular. तो बिल्कुल आप आसानी से ये चीज कर सकते हो. So do it yourself.
In order to prove that L2 and L3 are perpendicular, and in order to prove that L3 and L1 are perpendicular. So you can go through it. So that's all about question number first of exercise 11.2.